Hello everyone. So today we are going to make dimsums. We'll just need three things for the dough, that is flour, salt and water. First off, we'll start by adding salt to the flour and then we'll mix it. We'll add the water to the flour and then we'll start making the dough. After everything is mixed, we'll start kneading it. So our dough is ready and we'll keep it for resting. I'm taking few of my favorite vegetables for the mixture. चलिए अब हम अपनी सारी वेजिटेबल्स के ब्रूनोआ काट लेते हैं. ब्रूनोआ बेसिकली वेजिटेबल कट को बोलते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 mm डाइसेस. And we are almost there. We have got all our vegetables chopped. And now it's time to cook our vegetables. तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल डाल लेते हैं. We'll heat it. अब हम स्टार्ट करेंगे अपने chopped onions and garlic डाल के. We'll let them cook. So our onion and garlic are done and we'll add capsicum. And now we are adding carrot. Once it's done, we'll add chopped cabbage. Make sure to not cook your vegetables fully, as when the dim sums will get steamed, they can get mushy. We'll add salt as per the taste. And I'm also adding a tablespoon of soy sauce to give it flavor. So now our mixture is ready and we'll take it out to cool it down. जी हाँ, ये बहुत लाजवाब दिख रहा है एंड बहुत टेस्टी भी है. अब हम अपने डो की अप्रॉक्स 10 to 11 ग्राम्स की बॉल्स बना लेंगे. And now we are going to roll them out and make a thin sheet of them.
हमारी शीट्स रेडी हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टफ एंड शेप आवर डिमसम. We can have a look at another one. Also apply the water on the sides to stick the edges of the dim sum. चलिए अब हम अपना स्टीमर सेट कर लेते हैं. पानी बॉईल पे आ गया है लगभग. इसके ऊपर से ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे डिमसम चिपके नहीं. एंड नाउ वील प्लेस आवर डिमसम्स वन बाय वन. चलिए हम देख सकते हैं कि हमारे डिमसम्स रेडी हैं. ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऊपर की शीट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है और अंदर की स्टफिंग विजिबल है. एंड लेट्स एंजॉय.